Okay, good morning, students. So, in today's it is the introductory lecture of data structure. So, in this particular lecture, we will discuss the basics of data structure and the types and algorithms, etc. Okay, so the first, the definition. So basically, data structure is a method of organizing a large amount of data more efficiently so that any operation on that data can be performed easily. That means data structures are basically for arranging the data into a computer system. So on the basis of organizing methods, data structures can be divided into two categories. One is the linear data structures and another one is the non-linear data structures. Okay, so before discussing the linear and non-linear data structure, we will discuss the basic terminologies of data organization, like what do we understand by data. So what is the meaning of data? Data are basically the values or set of values. That means it is some information which we want to store. Data item, so data item refers to a single unit of values. Let's say we are saying we are storing integer values, okay? So the collection of integer values is known as a data item. That is a single unit of values. Okay, then group items, data items that are divided into sub items are called as group items. Okay, after that, elementary items, data items that cannot be divided. Like elementary means ki I am saying 5 is a number, we cannot divide 5 further into sub parts. Okay, so 5 is an elementary data item. Okay, attributes and entity is something which contains certain attribute or properties. Like attribute is associated with entity means like a person is an entity. And what can be the attributes of a person? Like name of the person, age of the person, salary of the person, designation of the person. These can be the attributes of that particular entity. Entity set means the set which is containing similar type of attributes for an entity set. Matlab where we can store multiple entities, that can be known as a entity set. Field क्या होगा? Field is a single elementary unit of information representing an attribute of an entity. फील्ड इज़ लाइक समथिंग, इट इज़ सेइंग कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, किसी भी एट्रीब्यूट को. ओके, लाइक नेम को हम क्या कह रहे हैं कि कोई पर्सन एक एंटिटी है, नेम इज़ एन एट्रीब्यूट. सो द फील्ड कैन बी लाइक फर्स्ट नेम इज़ अ फील्ड ऑफ द नेम, लास्ट नेम इज़ अ फील्ड ऑफ द नेम. Okay, then record is basically a collection of field values of a given entity. That means कि first name में हमने क्या information store करी है और last name में हमने क्या information store करी है, वो collection of field value, उसको हम record बोलते हैं. And file क्या होता है कि like कोई person entity है, उसके attributes की सारी information, किसी भी entity set की सारी information जहाँ पे हम store कर रहे हैं, that is known as a file. Okay, now let's discuss the classifications of data structure. So data structure can be classified into the following categories, like primitive data structures and non-primitive data structures. These are the, so primitive are those data structures which are already defined, जो कि आपने जैसे C में भी पढ़े हैं, integer, float, character, pointer, ये सारे क्या हैं आपके primitive data structures हैं which are already defined. Okay, then non-primitive data structures. Non-primitive data structures are something which are created with the help of the primitive data structures, like array. So array क्या होता है? Array is a collection of element, collection of similar type of element. Like हम integers का array बना सकते हैं, हम characters का array बना सकते हैं, हम floats का array बना सकते हैं. Okay, so this is something which is generated from the primitive data structure. Similarly, list, that means linked list, files, these all are non-primitive data structure. Okay, further non-primitive data structures को further हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. वन होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, सेकेंड होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स. ओके, लीनियर मीन्स जिनमें इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एक ऑर्डर में स्टोर हो रही है, एक के बाद एक दूसरी तीसरी. ओके, और फिर जो नॉन लीनियर होता है उसमें क्या होती है, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ऑर्डर में स्टोर नहीं हो रही है, वो रैंडमली स्टोर हो रही है हायरार्की की फॉर्म में. ओके, सो द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपका आता है एरे और लिस्ट के जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो होते हैं आपके स्टैक एंड क्यू, और जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो होते हैं आपके ग्राफ एंड ट्री. सो हम फर्दर नेक्स्ट यूनिट्स में इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, so here are the definitions of primitive and non-primitive. The primitive data types are the basic data types that are available in the most programming language like integer, float, etc.
and the non-primitive data types are derived from the primary data, like I already told you, and the examples are array structure, union, linked list, stacks, etc. Okay, now linear and non-linear data structure. So linear is a data structure organize the data in sequential order, like अभी मैंने बताया था एक लिस्ट की फॉर्म में, सीक्वेंस में जब हम स्टोर कर रहे हैं, लाइक पहला डेटा हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड डेटा हमारे सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन एंड सो ऑन. सो वी आर मेंटेनिंग अ सीक्वेंस, सो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. And the examples of linear data structure can be array, linked list, stack and queue. Okay. Similarly, non-linear data structure is where data is organized in random order. Randomly कहीं पे भी store हो रहा है, there is a no sequence formed for non-linear data structure. Examples of non-linear are tree, graph, dictionaries and heaps. Okay. So here we are describing all the linear and non-linear data structure. So I will not describe those in very detail. I will just give you the brief of these because we will study these topics further. Okay, so array क्या है basically? Array is a collection of homogeneous data elements. Homogeneous means same types of data element. If we talk about homogeneous, so homogeneous means same type of data element. ओके, सो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस. लाइक अगर हम कोई एरे क्रिएट करेंगे, या तो वो केवल इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, या तो वो कैरेक्टर स्टोर करेगा, या तो वो फ्लोट स्टोर करेगा. द एरे कैन नॉट स्टोर इंटीजर एंड फ्लोट साइमल्टेनियसली. ओके, each element of an array is referenced by a subscriptive variable or value. Like here we can see, यहाँ पे हमने एक array बनाया है and the array is storing element a0, a1, a2 till a9. So if we will count, there are 10 elements into the array and each element is referred as a subscripted value. A0 means the first value of the array. So in this way we can represent array. Okay, array further can be divided into two categories. This is a single dimensional array. Array can be two-dimensional or multi-dimensional. Okay, so the next linear data structure is list. So what is a list? It is a ordered set consisting of a varying number of elements to which insertion and deletion can be made. Okay, so like here we can see what is the difference between array and list. Array is containing homogeneous element. List will also contain homogeneous element. Okay, list will also contain homogeneous or heterogeneous element, but the difference is कि list में हम कैसे store करते हैं. Here will be a address field into the list. Okay. Stack. What is a stack? Stack is basically a type of array, but the storing pattern in stack is different. Like stack में जो होगा आपका, it followed a concept known as last in first out. Last in first out means कि जो एलिमेंट आपने सबसे लास्ट में एंटर किया है वो एलिमेंट आपका सबसे पहले स्टैक से बाहर आएगा. ओके, सो दिस इज़ द थिंग विच डिफरेंशिएट्स स्टैक फ्रॉम एरे. So it is an ordered collection of item into which new data items may be added or inserted and from which items may be deleted at only one end. One end means जो सबसे ऊपर है, that end is known as the top of the stack. As all the addition and deletion in stack is done from the top of the stack, so जो last element हम stack में add करेंगे, that element will remove the first from the stack. That's why it is known as last in first out or LIFO. Okay, next is queue. So queue क्या है? Basically what is the difference between queue and stack is कि stack was last in first out but queue is first in first out. Okay, so the first in first out means कि जो element सबसे पहले enter होगा वही element queue से सबसे पहले बाहर आएगा. तो इस basis पे अगर हम देखें तो queue क्या है आपकी, एक end से element enter होंगे, दूसरे end से element बाहर जाएंगे. Okay. Similarly, next is our tree. So what is a tree? Many real life problems can be represented and solved using trees. Trees are very flexible, versatile and powerful non-linear data structure. So a tree is an ideal data structure for representing hierarchical data. A tree can be theoretically defined as a finite set of one or more data items, okay, and which are represented as nodes. Similarly, graph is also a non-linear data structure which representation जो बेसिकली हमारा जो एप्लीकेबल होता है वो हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, लाइक इन जियोग्राफी, इंजीनियरिंग एंड सॉल्विंग गेम्स इन पजल्स. ओके, सो द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ द सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ नोड्स. ओके, सो डू नॉट
try hard to understand these as we will discuss these topics further in detail. Okay, next, what should be the characteristics of a data structure? If we are designing a data structure, if we are using a data structure, तो what should be the characteristics? So the characteristics can be like correctness, कि जो data structure का जो implementation है वो correctly implement होना चाहिए. Next is time complexity, like running time or execution time of operation of data must be स्मॉल, कम से कम होना चाहिए. हम जो डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि उसका जो रनिंग टाइम है वो बहुत कम हो. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दैट मीन्स कि जो मेमोरी यूसेज है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन का वो जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए. ठीक है, मतलब जब हम डेटा स्ट्रक्चर को अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करें तो वो कम से कम मेमोरी कंज्यूम करें. ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर, कि जब भी कोई डेटा स्ट्रक्चर बने तो ये पैरामीटर्स होने चाहिए. नेक्स्ट, नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ज़रूरत क्या है डेटा स्ट्रक्चर की. ओके, सो वी विल सी लाइक प्रोसेसर स्पीड. To handle very large amount of data, high speed processing is required. But as the data is growing day by day to the billions of file per entity, processor may fail to deal. That means कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा बढ़ता जा रहा है. If we will not apply a proper data structure to manage that data, तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्रैश हो सकता है, वो प्रॉपरली उस डेटा को प्रोसेस नहीं करेगा. सेकेंड क्या हो सकता है कि वेन एवर वी सर्च डेटा into a system and that the system is containing a large amount of data, तो अगर हमने कोई proper data structure apply नहीं किया है तो searching will be quite difficult. बट अगर हमने कोई proper data structure apply किया है, so we know the procedure how we can search a data in that particular data structure, so the searching will be easy. मल्टीपल रिक्वेस्ट मीन्स कि बहुत सारे पीपल एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं, सो इन दैट केस ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर इज़ क्वाइट एफिशिएंट. सो दीज आर सर्टेन नीड्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. ओके, सेकेंड थिंग कि जब हम अपना डेटा कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं तो हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना चाहिए स्टोर करने के लिए. तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम सेलेक्ट करेंगे. लाइक साइज़ ऑफ द डेटा, कि हम कितना डेटा स्टोर कर रहे हैं उसके बेसिस पे चूज़ करेंगे. स्पीड एंड मैनर डेटा यूज़, कि मतलब हमें डेटा किस स्पीड से एक्सेस करना है. डायनामिक होना चाहिए, चेंज कितना ज़्यादा चेंज होगा डेटा में, एडिट जल्दी करना है या कम एडिट करना है. स्टोरेज के लिए उसको कितना साइज़ लगेगा. ठीक है, अगर हमें वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन फैच करनी है तो वो कितने टाइम में इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो इन सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करके वी विल सेलेक्ट आवर डेटा स्ट्रक्चर. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज इट इज़ अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. Okay, so let's understand the meaning. An abstract data type is a mathematical model for data types where a data type is defined by its behavior from the point of view of a user of data, specifically in terms of possible values, possible operations on data of this type and the behavior of these operations. Okay, so basically abstract data type क्या है? डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक मैथमेटिकल मॉडल है जहाँ पे हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. डेटा के बिहेवियर मीन्स सिमेंटिक्स, सिमेंटिक मीन्स रूल्स, कि क्या रूल्स हमने अप्लाई किए हैं उस डेटा स्ट्रक्चर के लिए. ठीक है, ओके, स्पेसिफिक इन टर्म्स, यानी कि हम उसमें क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, और वो ऑपरेशन का बिहेवियर्स क्या है. तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे जब हम किसी भी डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं, सो दैट डेटा टाइप इज़ नोन एज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. So this contrasts with data structures which are concrete representation of data and are the point of view of an implementer, not a user. So a data type can be considered abstract when it is defined in terms of operation on it. मतलब किसी भी डेटा टाइप को हम एब्स्ट्रैक्ट कंसीडर कर सकते हैं जब हम उस डेटा टाइप को उसके ऑपरेशंस के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं तो. ओके, okay, so this is about our introductory lecture of data structure. Okay, and okay, one more thing about abstract data type, कि जो इम्प्लीमेंटेशन होगा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का वो हिडन होगा. कि मतलब हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं हम ये नहीं बताएंगे. हम केवल क्या बताएंगे कि ये जो डेटा टाइप है इस पर हम कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं और ये किस टाइप की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा. मीन्स द टाइप ऑफ वैल्यूज़ एंड द टाइप ऑफ ऑपरेशंस ऑन दोज वैल्यूज़. अगर ये दो चीज़ें हम किसी भी डेटा टाइप के लिए डिफाइन कर सकते हैं तो वो डेटा टाइप क्या होगा हमारा, दैट डेटा टाइप विल बी कंसीडर्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. Okay, so this is about the introductory part of data structures.
In next lecture, we will discuss the algorithms and some other basic concepts of data structures.